Morning students, I hope you all are doing well at your places, and today we'll be doing a very interesting poem that is Somebody's Mother. So let's just begin this chapter. This poem basically focuses on mother. So let's just title of our chapter, that is the poem, that is it's Somebody's Mother, right? And over here we'll be starting. Let's just read this poem where an old and a lovely woman, she seeks someone helps. वो किसी की हेल्प को क्या कर रही है, सीख कर रही है. देखिए व्हाट इज दिस. एक तो ए लगा हुआ है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वन वुमन, एंड सीक्स मतलब शी इज ट्राइंग टू सीक हेल्प फ्रॉम समवन, राइट? So let's just begin with this poem. The woman who was old and ragged and grey means she was very old, right? And rag means बहुत ही ज़्यादा फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने, and she is very grey means her skin is getting loosened day by day, right? And bent with the chill of the winter's day. और जैसे कि विंटर के दिन चल रहे हैं तो वो उनका क्या निकला हुआ है, वो थोड़ा सा बेंड होकर चलती हैं. The street was wet with the recent snow क्योंकि बर्फ पड़ी है इसलिए स्ट्रीट पे क्या है, स्नो है. एंड द वुमेन्स की फीट जो है देवर एजेड एंड स्लो. वुमेन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा धीरे चल रही हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड है और एज हो चुकी है उनकी. शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग. वो जेब्रा क्रॉसिंग पे शी इज जस्ट वेटिंग लॉन्ग टू क्रॉस द रोड वाइल इन द ट्रैफिक. अलोन बहुत ही ज्यादा अकेली हैं. अनस्केयर्ड बिना डरी हुई हैं. फॉर एमिड द स्ट्रॉन्ग द थ्रॉन्ग. थ्रॉन्ग मीन्स आप कह सकते हैं रास्ते के बीच में रास्ता पार करने के लिए वो थोड़ा सा डरी हुई है. एमिड मीन्स इन बिटवीन समथिंग, राइट? ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास हियर बाय. जो ह्यूमन बींग्स है इधर उधर पास कर रहे हैं. नॉर हीडेड द ग्लांस ऑफ हर बाय द एंशियस आईज. मतलब दे आर नॉट इवन ग्लांसिंग. उनकी सिर्फ एक नजर भी नहीं पड़ रही है उस ओल्ड वुमेन के ऊपर. डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट. वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रीट पे खड़ी हुई है. वहां पे कई लोग हंस रहे हैं और कई लोग शाउट कर रहे हैं. ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल्स लेट आउट. और बहुत ही ज्यादा फ्री है वो देख रही है और शी इज वेरी हैप्पी कि कैसे बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं. एंड केम द बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप. बच्चे जो स्कूल से बाहर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ियां आ रही हैं वापस, राइट? हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप. हर जगह जगह स्नो हो रखी है और बहुत ही ज्यादा वाइट और डीप है. एंड पास्ट द वुमन वाज सो ओल्ड and she is feeling too grey. Hasten the children on their way. Hasten means very fast. This haste means in a hurry. और इसका past tense ed लगा रखा है. No offered a helping hand to her. Nobody is helping her to cross the road. And so meek. She's so weak, so timid. What do you mean by timid? Timid means shy. And she is very afraid to stir, means she is very afraid to move there and here. And lets the carriage wheels or the horses feet. वो क्या है, उनके हाथ में बहुत ज्यादा लगेज है. एंड शुड क्राउडेड हर डाउन इन अ स्लिपरी स्ट्रीट पे वो चल रही है. एट लास्ट कम वन ऑफ द मेरी ट्रूप. फिर एक अच्छा सा रास्ता आता है जब शी इज फीलिंग क्वाइट हैप्पी. एंड द गेस्ट लेडीज ऑफ ऑल द ग्रुप. सारे लेडीज का कोई ग्रुप है. दे आर वेरी हैप्पी. व्हाट डू यू मीन बाय दिस गे? गे मीन्स हैप्पी. This gay means happy, or est means the superlative degree of happy, right? He paused in beside her and whispered low. वो उसके सामने रुका और वो बहुत ही ज्यादा उनके कान में फुसफुसा रहा है. whisper means to speak very slow. I'll help you cross if you wish to go. अगर आप इधर जाना चाहते हैं then I'll definitely help you out. उनके बूढ़े हाथ पकड़े हुए हैं on the strong young arms में, right? She placed and so without hurt and harm. उनको बिना नुकसान पहुंचाए he is helping to cross the road. He guided the trembling feet along. बहुत ही ज्यादा उनके पैर भी कपा रहे हैं because she is very old. Proud that his own were firm and strong. और वो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा है कि उसके खुद के जो पैर हैं वो बहुत ही ज्यादा कैसे हैं, फर्म है, मतलब स्ट्रांग है. और स्ट्रांग, फर्म मीन्स अपने इरादों पे डटे हुए हैं. देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स. फिर वापस से वो अपनी फ्रेंड्स के पास गया. हिज यंग हार्ट फील्स happy and content. What do you mean by content? Means he is feeling too satisfied that he helped an old lady to cross the road. She is somebody's mother. वो किसी की मदर हैं. और बॉयज यू नो, लड़कों के बारे में तो आप जानते ही हैं. फॉर ऑल शी इज एड एंड वेरी पुअर एंड स्लो. बहुत ही ज्यादा स्लो. एंड आई होप सम फेलो विल लेंड हर अ हैंड, जिससे कि वो और आगे अपने घर पहुंच जाए. टू हेल्प माई मदर. यू अंडरस्टूड? समझ में आया कि कोई हमारी मदर को भी ऐसे हेल्प कर सकता है. इफ एवर शी इज पुअर, अगर हमारी मॉम भी, शील वन डे शील डेफिनेटली गेट पुअर, शील डेफिनेटली गेट ओल्ड एंड शील, राइट? व्हेन हर
own dear boy is far away, और जब उनका खुद का बेटा बहुत दूर होगा, and somebody's mother bowed low her hand head, कि कोई कोई और लड़का उनके आगे सर झुका के उनको वापस किसी रास्ते में कभी क्रॉस करेगा, कभी हेल्प करेगा, इन हर होम दैट नाइट एंड द प्रेयर शी सेड, एंड देन हमारे वो घर पे आके उस लड़के के लिए क्या करेंगी, प्रे करेंगी, शी विल ब्लेस हर और शी विल ब्लेस हिम कि उसने मेरी मदद करी, एंड वॉज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय, कि गॉड जो है उस बॉय के लिए सब कुछ अच्छा करे, एंड हु इज समबडी सन, जो कि किसी का बेटा है, किसी का प्राइड है और किसी का जॉय है, मीन्स किसी का गरूर है. एंड दिस हैज बीन रिटन बाय मैरी जो ब्राइन, राइट, अबाउट द पोएट. दिस he was born in 1806 and was died on 1913, right? And was a children's author. बच्चों की कहानी लिखते हैं ये. She was born in New York. New York, we all know it's in America. And some of her best work, जो उनकी कुछ best work है, it includes somebody's mother and grandma's memories. ये जो है किसी इनका बहुत ही ज्यादा अच्छा काम है, राइट. मूविंग ऑन टू द वर्ड मीनिंग. रैग मीन्स बहुत ही ज्यादा फटे पुराने कपड़े पहना. वियरिंग ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ. ग्रे मीन्स जो कि अपने बहुत ही ज्यादा ग्लूमी है, सैड है, वो अपनी स्किन से बहुत ज्यादा डल है. थ्रॉन्ग इज अ क्राउड ऑफ पीपल, right. Heated means we have to pay an attention. Anxious means we are extremely worried, and hailing means cheering to welcome. Hastened, haste means worry. अगर आप इसको NED को हटा देंगे, this haste means hurry, बहुत जल्दी जल्दी करना. Crowd her own. Down means push into small spaces. Laddie is a boy, and trembling means kapkapana, that is shaking, and content means happy and satisfied. I have already told you. Moving on to the practice time, first we'll be completing with the MCQs. How was the young boy's heart after helping the old woman? He was feeling very contented. उसको बहुत ही ज़्यादा satisfied feel हो रहा था, right? How did the old woman look? वो कैसी लग रही थी? She looks very rag and grey. Or over here there are two words, rich and snobbish. Snobbish means the one who is very akdu, right? Who formed the group paused beside her and whispered low, and of course the greyest lady. What kind of a day it was? It was a rainy day, right? Yes, it was a rainy day. What is the meaning of the word throng? Throng, we all know that is the crowd of people, right? The old woman, she was very old. This woman was old and she was grey. Moving on to the fill in the blanks. So the woman, she was old and she was ragged and grey, right? And she bent with the winters. She bent with the chill of the winters. And what was recently snow? That is the street. The street it was full of recent snow. So the street was it was wet with the recent snow. वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा snow थी. And the women's और woman कैसी हो रही थी? And the woman feet were aged and slow. Right, moving on to the true and false. So no one offered a helping hand to an old woman. This is false. Of course, that boy, he helped the woman to cross the road. The meaning of the trembling is happy. Of course, it's false. Meaning of trembling is shaking, kapkapana. The meaning of the headed, hurried, as we studied over here. You can see headed. Yeah, it means to pay attention. Heed means to pay attention. So that means this is absolutely false. Yes, this is false, right? The old woman stood at the crosses and crossing and waited long. Of course, this is true. The meaning of the word content is happy and satisfied. We all know it's. Moving on to the question answers. Please do all these question answers at your own. I hope you all understood about this chapter. This chapter basically
revolves around a mother, that how a boy helped a mother to cross the road, and it was somebody's mom, and how this mother, she also blesses someone's son, or you can say someone husband. So you also please take care of your mothers and keep doing hard work for your exam and stay blessed. Thank you.